I was bullied because I was tiniest. I knew was that my strongest suit is voice. मुझे पता नहीं था कि मुझे उसमें इंटरेस्ट है कि भी नहीं है, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं रेडियो में जाऊंगा या वहाँ कुछ करूंगा. मुझे इतना जरूर था कहीं बैक द बैक ऑफ माई माइंड दैट आई एम एंजॉयिंग ऑल ऑफ दिस. मुझे एक्टर बनना है यार. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द फैट किड शो, जहां हम करेंगे गपशप एकदम ही अनफिल्टर्ड. देखते ही देखते भाई मेरे 10 एपिसोड और सीज़न 1 कहाँ ख़त्म हो गया समझ में ही नहीं आया. एंड आज से शुरुआत होती है मेरे सीज़न 2 की. तो वेलकम बैक टू माय चैनल. इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. ये मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है. अगर आपको पॉडकास्ट पसंद भी आ रहा है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एज वेल एंड फॉलो अस ऑन स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, Amazon म्यूज़िक एंड छोटे मोटे स्निपेट्स के लिए प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. सो आज के जो गेस्ट है हमारे, हमने इनके साथ बहुत सारी बातें करी है विच इज़ रिलेटेड टू हिज जर्नी इन बिकमिंग अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड ऑल्सो एन एक्टर. इनका एक OTT पे एक सीरीज़ लॉन्च हुआ है विच इज़ कॉल्ड स्पेक्टर ब्लैकआउट. हमने इसके बारे में भी बात करी है एंड स्ट्रगल टू बिकम एन एक्टर. आई होप दिस पॉडकास्ट इज़ इंसाइटफुल फॉर यू एंड प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द फैट किड शो, जहां हम करेंगे गपशप एकदम ही अनफिल्टर्ड. आज के जो हमारे गेस्ट है, इनका इतना लंबा इंट्रोडक्शन है ब्रो. 1500 इवेंट्स इन्होंने होस्ट किए हैं, 700 प्लस वॉइस ओवर, नंबर 1 एंकर एंड टॉप 15 MCs में से एक, एंड मोर देन 25,000 ऑडियंस को उन्होंने रीच आउट किया है. ही इज़ none other than Joe. Hi Joe, welcome to the Fat Kid Show. I'm so excited to talk to you. Same here, Reshma. Thank you very much for having me here. This is such a beautiful set and what a vibe. I love the energy. एक और चीज़ मैं भूल गई, by the way, he is also an actor. Let me add that. And his new series is out. Do you want to talk about it? Acting is something which happened in a main scale, I would say, recently. Yeah. Of course, ये मेरा सबसे बड़ा जो ड्रीम था लाइफ का. दिस हैज़ बीन माई गोल, यू नो, दैट आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर. बट टू रीच देयर इन अ कमर्शियल वे, it happened after a struggle of about 15 plus years. When I say struggle, it's not the typical struggle story which you get to hear. People are in Bombay, लोग भटक रहे हैं, auditions पे auditions दे रहे हैं, ये कर रहे हैं. मेरी struggle थोड़ी अलग रही है. And hence, I don't call it a struggle, I call it a journey. Because the first thing that I ever did in the realm of media was to become a voiceover artist. Yeah. Voiceovers से होते हुए anchoring, hosting, and becoming an MC for various kinds of corporate shows, weddings, and I enjoyed each and every milestone in this journey. And तब जाके कुछ दरवाजे खुले, and I did a few short films and a few TV commercials and a few videos with some really good influencers in the market and content creators. And tab, Zennifer Fatma from Zen Films, and then she said, we're doing this. And then she held a casting audition. I did my bit and I was selected. I was super happy. And I did not know that this is actually going to be aired or telecast on Z5. Yeah. So I did it because I loved the concept, and then she was giving me an opportunity to be in a series. Yeah. But she never told me or anyone that, oh, this is going on Z5. Yeah. Which platform it is, you didn't know? The platform Yeah. was the cherry on the top, and we were like, wow, this is amazing. Hence it became a life-changing moment all over again. Okay, before we go ahead, let us recap. Where did your voice over artist journey begin from? How old were you? कैसे समझ में आया कि आपको ये करना है? So बचपन से ना स्कूल में, You're a Delhi kid. हाँ, I'm born and brought up in Delhi, even though my roots are down south in Kerala. But I grew up in Delhi. I studied in the same school for 12 years. And चाहे कोई भी period हो, I was always inclined towards music or cultural activities or dramas, theatre, जो भी कह लो आप, school level पे, yeah. And I was always in the front for that. People appreciated me doing that. I enjoyed doing it. मुझे बड़ा मज़ा आता था. उस टाइम पे clarity नहीं थी कि करना क्या आगे लाइफ में जाके, yeah. So
But as I saw that I'm enjoying it, I'm being accepted, and कहीं ना कहीं मेरी कुछ कमियां हैं जो मेरी लाइफ में, जो आज भी मैं अगर सोचूं, and being in Delhi, being a young boy in the early 90s or late 80s, I was the shortest in the class, and everyone else out there was mostly from North India, Haryana, UP. Lambe lambe the ladke. I have been bullied so many times in the school, in the classroom. People used to make fun of my official name, which is Jiju Mohan. So Jiju, Joe is my stage name, and that's how I am. Now I'm rebranded. Rebranded. Now legally my name is being changed as well as we speak. So, but कई सारी चीज़ों को जब मैंने वो फेस किया, the only way I could emerge out of that was by focusing or channelizing my energy towards something which made me happy, something which made me feel that ठीक है, जितना मजाक उड़ाना उड़ा लो. Were you introvert because of this? Yes, I still am. I'm an ambivert, and a lot of people don't believe this, but when it comes to the work or the craft, I'm extrovert. You put me in front of anybody and I can talk to people, but when it's just me, I prefer to just be within my own, that little realm of mine, Yeah. अपने cozy corner में. That's it. But as a small kid, to surpass that, to emerge from that situation, thank God that I thought of focusing my energy. किसी ने बोला नहीं था मुझे करने के लिए. हाँ, एक आध बार ज़रूर मुझे किसी ने शायद बोला था कि कोई बात नहीं, तो तू ये कर सकता है, तो तू इसमें अच्छा है, तू लंबा नहीं है तो क्या हो गया. I was bullied because I was tiniest. I was the first, in the line, वो prayer assembly line में सबसे पहले खड़ा होता था मैं. And there were girls who were taller than me, and they used to, look down on me sometimes. तो ये चीज़ें जब देखी मैंने, it used to affect me. Yeah, People for sure. never took me to play in their cricket teams, in their football teams. I mean, school level पे. मुझे बड़ा बुरा लगता था. Also to add, हमारे उस टाइम पे ना सोशल मीडिया भी नहीं था. Yes, तो आपको yeah. वो एजुकेशन that it is Yeah. okay Yeah. was not there. वो नहीं था. हाँ. Absolutely. But पता नहीं कहाँ से, I think the credit also goes to my music teacher. So she was there. There was a lady called Sarojini. She was our teacher, Sarojini ma'am. And then these people, they really, empowered you by motivating you कि भाई बेटा आप इसमें बहुत अच्छे हो. आप इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे बजाते हो. कहाँ से सीखा आपने? मैंने कहा मैं कहीं सीखा ही नहीं. And I used to play all rhythm instruments, basically percussions जिसको कहते हो आप, तबला, bongo, congo, drums and all of that. मैं कुदरती बजा लेता था. रिदम की सेंस थी कहीं ना कहीं, वो जीन्स में है मेरी मॉम की तरफ से, और एक सेंस ऑफ परफॉर्मर था कहीं से, तो वो भी आया था. मैं बड़ा खुश होता था, मैं कॉन्फिडेंट होता था उस चीज़ को करके. फिर उन्होंने मुझे स्टेज पे रखा. स्टेज पे व्हेन आई एम प्रेजेंटिंग, लेट्स से न्यूज़ के कुछ लाइंस बोल रहा हूँ मैं, या कोई चीज़ है, किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. अब मुझे थोड़ी पता था आगे चल के एंकरिंग वाले लाइफ में ये काम आने वाली है चीज़. मैं तो बच्चा था. You didn't know what anchor is. I had no idea. Yes. Even after I grew up also, I didn't know what is an anchor or an MC. But these were the ways I gained confidence. I knew I might be less in certain areas, Yes. but God has given me certain things which I should be proud of, and fine-tune it, sharpen those skills that you emerge. And also, you're the teacher who plays a very important role. We Yes. don't realize this. Yes. Growing up for me as well, I may not be the best when it comes to speaker, but I've grown up in a convent school, and wherein they would tell me कि present कर लो types. Like they would see कि हाँ Reshma is a good presenter, and then वो मुझे stage पे खड़ा कर देते. And that Yeah, true. is really helping me now. If I give interviews, if I talk to people, I know कि मुझे बात कैसे करनी है, अपनी आवाज़ ऊपर नीचे कब करनी है. तो because of my teacher, it's what I am today. When we speak about teachers, especially these two, Sarojini ma'am and Pinky ma'am, I was like maybe 10, 12 years old when I encountered, these teachers. And what I remember of them is this, Yes. that it's not that they praised me. No. Praises won't make you any good. Correct. You need that constructive, feedback, criticism जिसको कहते हैं, positive वाला. वो तो चाहिए, improve नहीं तो कैसे करोगे आप? हाँ. लेकिन you need someone who encourages you. Correct. जो आपको बता दे कि बेटा ये कमी है तो कमी है, लेकिन ये देखो, ये जो है ना, ये पॉजिटिव है, इसमें तुम अच्छा कर पा रहे हो, तुम और अच्छा कर सकते हो.
करो, let's do it together, मैं सिखाती हूँ. That really motivates, and if kids get that in the right age when they are growing up, I think it will definitely be a solid point in your Yes. character with the Yes. personality that you build. So Yeah, and you know, unconsciously तभी you pick up these characters yes, and then conditioning. हाँ, and then later on when you grow up ना तभी आपको याद आता है और Yeah. समझ आता है. Absolutely. और इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं. I mean, I believe in truly appreciating any kind of talent, whether it's performing arts or whatever kind of talents. Hence, people around me know this for a fact that ये हर किसी को appreciate करता है, हर किसी के talent को, चाहे वो छोटा हो, जो कुछ भी हो, he pats a back, you know. Because वो कोशिश भी तो कर रहा है. क्योंकि वो कोशिश कर रहा है. मैं उस कोशिश की दाद देता हूँ कि भाई वो कोशिश कर तो रहा है. क्योंकि वो कब क्लिक हो जाए हाँ. समझ में नहीं आएगा. You never वो know. इंसान कोशिश से और ये मैंने improve वहाँ हो से रहा सीखा है. है. वो मेरे it's become a part of my personality also. That I feel great. good when I say कि भाई you can do it. I see you struggling. I see you doing working very hard. Just थोड़ा सा fine tune ऐसे कर लो, ऐसे कर लो. So you know, if that brings a smile on that other person's Yes. face, and if that gives them that little beam Yes. of confidence, then so be it. I feel happy about it. Okay, so this was your like bullying story and getting confidence. Yes. How did voiceover artist thing come? Yes. From there, one thing I knew was that my strongest suit is voice. And since everyone also, you know, they attested to it. When I was in my 12th grade, somewhere around 12th or 11th, we used to have these different kinds of activities, dramatic activities and stuff like that. So someone from our church group approached me, and they said, we are doing an audio drama for radio. There's a radio Vishwani. This was, I don't know if it's still there or not. It's a long time back in Delhi. So they wanted a voice. They wanted a voice of an angel. मैं तो बच्चा ही था, मतलब 11वीं या 12वीं में पढ़ा था मैं, सो पढ़ रहा था. सो ओके, करना क्या है मुझे? आप आओ, आपको इंटरेस्ट है? मुझे पता नहीं था कि मुझे उसमें इंटरेस्ट है कि भी नहीं है, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं रेडियो में जाऊँगा या वहाँ कुछ करूँगा. मुझे इतना ज़रूर था कहीं बैक द बैक ऑफ माई माइंड दैट आई एम एंजॉइंग ऑल ऑफ दिस. मुझे एक्टर बनना है यार, मुझे स्क्रीन पे जाना है. मुझे बस ये सारी चीजें पता ही नहीं थी ना कि ये करियर भी होता है. Exactly. We never knew about it. I never knew about it. There was no awareness of it. It's like you said, social media was not there. Information was not that all that spread across. So I went, and this person, I forgot his name now, but he is the one who guided me. He said, ऐसे करो, ये 2-3-4 lines हैं, इसको ऐसे बोलो. And I think the lines were the very popular lines which Angel says to Mary, Mother Mary, when you know, when she's expecting a child. They say, Mariam, भयभीत ना हो, तू आज एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना. So that was the voice. I was like, wow. तो वो मॉड्यूलेशन कैसे करना है मुझे बताया था कि इसको थोड़ा सा डीप लेना, फील करना है, इसको ऐसे बोलना, इसको वैसे. फिर मैंने वो किया. उस टाइम पे मैं बच्चा था, मेरी आवाज़ भी काफ़ी अलग थी, बट स्टिल इट केम आउट प्रीटी वेल. वहाँ मुझे एक और चीज़ नजर आ कि भाई वॉइस ओवर्स, वाह ये भी सही है. तो You got a thrill. वो थ्रिल, मजा आ गया मुझे. बट मुझे उस टाइम पे ये पता नहीं था कि इट्स कॉल्ड वॉइस ओवर्स. मुझे ये पता था कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या. हाँ, अच्छा ये भी काम है. एंड देन ही सेड, हाँ दिस इज अ वेरी गुड लाइन ऑफ वर्क. बेटा ये जितनी आप चीज़ें सुनते हो ना रेडियो पे, ये प्रेजेंटर्स अलग होते हैं, और ये जो एड्स बनते हैं या टीवी पे जो आप एड सुनते हो, ये जो पीछे से आवाज आती है, इसको वॉइस ओवर कहते हैं. ये करो, मजा आ रहा है तो ये भी करो. तो फिर वो जर्नी वहाँ से शुरू हुई. सो आई वाज मे बी अबाउट 16-17 मे बी, बट इतना मिला नहीं फिर आसानी से काम. वो बस वो एक पहली बार था, उसके बाद ख़त्म. उसके बाद फिर मुझे, मेरे जहन में तो ये बैठ गया ना कि मुझे करना है ये. मैंने फिर कोई कसर नहीं छोड़ी. मैं हर जगह जहाँ पूछ सकता था पूछा, इधर उधर. देन अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, शी सेड स्टूडियोज पे जाओ. देन देयर वाज अ स्टूडियो दैट शी रेफर्ड टू, यहाँ जाओ. बट आई हैड गॉन टू एटलीस्ट, if not less than 40, maybe more, 40-50 studios, एक के बाद एक. मैं बस यही काम था मेरा, क्योंकि मुझे और कुछ नज़र नहीं आ रहा था. आई वॉन्टेड टू बिकम एन आरजे एट दैट टाइम. थोड़ी नॉलेज आई थी कि भाई ओके, होस्टिंग, प्रेजेंट करूँगा शो. बट आई नेवर हैड मास कम्युनिकेशन डिग्री. आई नेवर हैड द प्रॉपर गाइडेंस टूवर्ड्स इट. तो लोगों ने भी बोला कि नहीं है, ऐसे थोड़ी बन जाओगे तुम, ओपनिंग ही नहीं है, वैकेंसीज नहीं. मैं ऑफिस में जाता था, लाइक रेड एफएम का ऑफिस था, वहाँ घुस गया.
अच्छा कुछ यहाँ पे यू हैव एनी वैकेंसीज फॉर आरजेस? सॉरी वी डोंट. एंड देन रेडियो सिटी में चला गया या मिर्ची में चला गया. उस टाइम पे सोचो कुछ नहीं है. और ये टाइम पे आपके पेरेंट्स ने कैसे रिएक्ट किया? दे हैड नो क्लू कि मैं ये सब कर रहा हूँ. एज ए प्रोफेशन भी मतलब एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट था बहुत डिफिकल्ट. अब मैं उनको तो ये पता ही नहीं था कि मैं ये भी सोच रहा हूँ. उनको ये पता था कि मैं आई वांट टू बिकम एन एक्टर एंड आई लव सिंगिंग एंड पर वो दिस ऐसे दैट. देखा जाएगा ना कि एक्टर का कीड़ा इसमें. हाँ, but my dad was very much against all this media interest that I had. He was like वेरी टिपिकल डैड. very typical, and he was in the Air Force, so Fauji mentality, and he was very strict and stuff. They didn't And, tell you to join Air Force? of course, he from my childhood, he wanted me to either be a doctor or or into science or something, Same, or like a or very strict dad. or get into Army, Navy, Air Force. Choose yours. मैंने यार नेवी में जा नहीं सकता, एयरफोर्स में जा नहीं सकता, क्योंकि एयरफोर्स के लिए हाइट चाहिए, नेवी के लिए साइंस चाहिए, मैथमेटिक्स वगैरह चाहिए होता है. मेरा डब्बा गोल है इन सब चीज़ों में. बचा है आर्मी. आर्मी की यूनिफॉर्म भी मुझे पसंद आती है. चलो ठीक है, आर्मी ट्राई कर लेते हैं. तो आई वॉज लिविंग डुअल लाइफ. Oh God. One life to make my parents happy, another parallel life to make my soul happy, and which was not known to my parents for a long time. Oh God. बट उनको इतना पता था कि ये कुछ ना कुछ तो कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कुछ कर रहा है, चलो ठीक है, एटलीस्ट ही इज नॉट लॉइटरिंग अराउंड एंड वेस्टिंग हिज लाइफ. एज लॉन्ग एज एंड व्हेन आई क्रॉस माई कॉलेज एंड एवरीथिंग, सो जॉब करने की बात आई तो मैंने जॉब भी ढूंढा. ऑफ कोर्स उसके बीच में कुछ चीज़ें थी वेयर आई रोट द एग्जाम्स फॉर द NDA, नेशनल डिफेंस अकेडमी. आई फेल्ड माई रिटर्न. वो ख़त्म हुआ तो वहाँ रह गया, बड़ा दिल टूटा मेरा. फिर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की बारी आई, उस तक पहुंच ही नहीं पाया मैं, बिकॉज मेरा कॉलेज लास्ट ईयर में छूट गया था उस टाइम पे. देन आई हैड टू कंटिन्यू इट लेटर. तो वो भी रह गया. फिर मैं अब क्या करूँगा मैं. माई फादर वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड. अब क्या करोगे तुम, वॉट विल यू डू, यू वेस्टेड योर लाइफ. डैड, आई विल वर्क, आई विल डू अ जॉब, and I will make sure that I support the family and I'll do what I'm supposed to do. But when I do that, beyond that, what I do for my passion, because I think I like doing certain other things in the creative field, उसके लिए मना मत करना please. I will do that from my own time. भले मैं नींद काट के करूँ. तो मैं सोता भी बड़ा कम था, मैं 3-4 घंटे सोता था बस. Because I was, the first job that I did was a door-to-door salesperson. I was working in Gurgaon. I started with that. I enjoyed it. Because you were getting to talk? Yes, because I was getting You to were see the present. reaction. Yeah, I was like, I'm presenting something, right? हाँ. उस टाइम पे नहीं पता था ये. मुझे इतना था कि मुझे बड़ा मजा आ रहा है. हालांकि that journey was also not easy because मैं उसमें रोया भी हूँ. Because आप जा रहे हो किसी के घर पे सुबह सुबह and knock कर रहे हो, दरवाजा खुल रहा है and they slam the door back on your face. Insulting. हाँ, very insulting. And I'm very sensitive. I'm super emotional. रोने की बातों में मैं रो जाता हूँ, हंसने की बातों में पागलों की तरह हंसता हूँ. So I'm on the extreme. Very vocal about your emotions. I'm that very way. expressive and very vocal about. expressive. और मुझे वो बात दिल को छू गई थी. And I was like, अरे. फिर मैं जब नीचे गया, मैं वहाँ पे बाइक के पास खड़े होकर बात सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ. टारगेट दिया मुझे. And I was hardly 18. And like टारगेट दिया मुझे, ख़त्म करना है, ख़त्म करूँगा तो वो पैसे मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे तो डैड ने तो वैसे ही कस देना है मुझे. अच्छा अब क्या करूँगा मैं. ओके, अब इसको इस तरह से ट्राई करूँगा. अपने दिमाग में मैंने इम्प्रोवाइजेशन करके उसका चला गया वापस अगले फ्लैट पे. और वहाँ पे मैंने एक पिच करा, वो अच्छा लगा उसको. एंड दैट गाय एक्चुअली इन्वाइटेड मी. ही सर्व मी. बेटा क्या लोगे. अच्छा चाय पियोगे, चलो पियो. बताओ क्या बताने आए थे, बताओ. सर में ये है. तो ना यार ऐसे भी लोग हैं वैसे भी लोग हैं, लोग तो हर किस्म के होते हैं. आप देखते हो अगले 100 जो लिस्ट में नाम है, इनमें कितने अच्छे मिलते हैं और कितने बुरे मिलते हैं. फिर वो मेरा एक टारगेट बन गया, एक गेम बन गया वो मेरे लिए. तो करते करते आई लर्नड हाउ टू सेल. आई वाज लाइक सो हैप्पी बिकॉज आई मेड गुड इंसेंटिव उस टाइम के लिए, उस टाइम के हिसाब से. I made good money in incentives. I was very happy. I did that job for about 6 months. Then I got a better opportunity in call centers, and it was the boom time. I joined Airtel as an inbound customer service call caller. वो हुआ, and then वहाँ से एक opportunity किसी ने दिखाया, बताया कि भाई एक और international call center वहाँ चले जाओ. वहाँ पे मैंने apply करा, वहाँ select हो गया. So and then वहाँ जाके मैं I got exposed to training.
बट ये सब जगह पे वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जर्नी कहाँ रह गई थी? पैरेलली चल रही थी. क्या चल रहा था तब? सो जद्दोजहद चल रही थी कि आई एम गोइंग टू स्टूडियोज आस्किंग फॉर जॉब्स कि भाई आई वांट टू बिकम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट. पहले तो मुझे बोलना भी नहीं आता था कि आई वांट टू बिकम वॉइस ओवर आर्टिस्ट. मैं कहता था सर वो मुझे आवाज़ जो होता है ना, आप रिकॉर्ड ऐड के लिए ऐड वॉइस बनना है मुझे, ऐसे सब बोलता था मैं कहता चल जाए ऐसे, कहाँ से आए तुम, ऐसे बोलते थे. हाँ, दोनों तरफ से धक्के खा रहे हो ना, धक्के तो वहाँ खाई. दरवाजे खा रहे हो, हाँ. यहाँ पे भगाए जा रहे हो आपको. तो ये हुआ एंड देन आई वाज लाइक, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता था पता है. एंड बंदा इतनी उम्मीद के साथ जाता है और किसी से एक तो बात कर रहा यंग, है. कोई गाइडेंस है नहीं, हाँ. दरवाजे पे दरवाजे बंद होए जा रहे हैं. एंड आई यूज्ड टू लुक सो यंग, मतलब आई वाज 18 बट आई यूज्ड टू लुक लाइक 12. किड. तो आई वाज लाइक malnutritioned kid. कहते क्या है, क्या चाहिए, दिस इज हाउ दे यूज्ड टू स्पीक, यू नो, एंड द एटीट्यूड. But Joe, in all this, Yeah. did it affect you mentally in some way or the other? And how did you cope up with that? Do you remember? I would say emotionally yes. Mentally probably didn't reach there. But did you talk to somebody back then कि मेरे साथ ये हो रहा है? I didn't have anybody to talk to or to Explain the lean on to situation. or to tell कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है या मैं क्या करूं. कुछ नहीं. दोस्त भी नहीं, दोस्त मेरे समझेंगे मेरे नहीं. बड़े गिने चुने दोस्त थे पता है. और मेरे सारे दोस्त ना बड़े पढ़ाकू थे, बड़े अच्छे अच्छे लेवल पे थे, वो सब इधर उधर निकल गए थे. हाँ. एंड मतलब कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया है, and कोई कहीं कोई पता नहीं यूएस चला गया है. हाँ. एक तो वो भी तो डिप्रेशन हो गया ना कि ये सब जा रहे हैं आगे, मैं यहाँ पे वही struggle कर मतलब रहा हूँ. वो लगता था मुझे कि for sure. यार ये सब तो निकल गए और जूते पड़ेंगे मुझे, इस नाम पे भी जूते पड़ेंगे. देखो वो भी चला गया, तू भी चला गया. और जो चर्च वाले जो ग्रुप थे हमारे, उसमें भी मेरे जो पियर्स थे हाँ. वो भी अच्छे अच्छे, मतलब वो कहीं जॉब कर रहे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं. और तू कॉल सेंटर में चला गया तू. हाँ. मुझे वो कॉल सेंटर बुरा नहीं लगता था, मुझे कॉल सेंटर्स के जॉब में बड़ा मजा आता था. हाँ. क्योंकि वही हो गया ना, आपको बात करने मिल रहा है. मुझे बात करने It को- all comes back to that same thing कि आपको बात करने मिल रहा है. So, You are able to present it. I'm able to present a story. I'm able to present something. तो वहाँ पे मुझे मज़ा भी आता, मैं बहुत मेहनत करता था उसमें. एंड मतलब मेहनत एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं कभी पीछे नहीं मुड़ाऊँ. You know, in बहुत. all of this, I realized that if I had to introduce Joe again, I would say कि Joe never gives up. That This is the right. one thing. I'm an eternal like, optimist. हाँ, अभी तक मैंने जितनी बात की ना, Joe never gives up. Yeah. The journey you have had, I mean, not a lot of people want to have that or had it when they were young. Yeah. So this statement is like the apt introduction for you now. If I had to redo my intro. But yeah, I don't give up because, and it has been my mantra from my And you know, childhood. this is the quality not everyone has. That consistency and never giving up attitude. वो जिद होती है ना. हाँ, वो जिद, वो जुनून जिसको हाँ, कहते हैं. मतलब ऐसी जिद होनी चाहिए कि भाई मेरे Yeah. को ये करना है तो करना है, चाहे दुनिया जो भी सोचे. Absolutely. मुझे पता है कि मेरे मन को भाया तो मैंने कुछ भी किया. Exactly. Simple. And I never bothered about anyone else telling me don't do this, don't do that. क्यों? I don't care. मैंने अपने डैड और मॉम की जो उनकी जो वो थी विश थी कि भाई जॉब करे, ये फैमिली को सपोर्ट करे. I come from a very small, you know, very lower than medium level, I would say, family. Even though my dad was in the Air Force, but he was a non-commissioned officer, and then salaries come hoti, and then he had to take a retirement because my elder brother, by birth, he falls under mental retardation spectrum. It's actually somewhat connected or parallel to autism. Some Okay. people call it autism as well, but we are not. Honestly, till today, we don't know what it is exactly. Okay. But it's easier to say it's a part of autism is there. Because he can't speak, there's a speech retardation, there's a mental intelligence retardation भी है, intellectual avenue में, because he couldn't study the way others could. Even till today, he's dependent on the family. Correct. तो my dad had to leave Air Force. So And ये सारी चीजें आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती है. बचपन से, and he's elder to me. So, you know, playing with him, communicating with him, and to reach out to him in a certain way because he doesn't understand what you're saying. But I understand his expressions. Yeah. He understands my expressions. So if I'm crying, he will cry. Yeah. I get If it. I'm angry, you'll see his face changing. Because He doesn't know why, Yeah. but just because he loves He's you. just picking up your behavior. Yeah, he mirrors you. He mirrors you. Yeah. That's So the word. lot of learning in that phase happened unknowingly.
And I'm happy that it happened because that conditioned me in a certain way. And touch wood, I feel happy when I say that I'm an eternal optimist. Because I know, वो कहता है ना जो होता अच्छे के लिए होता है, I know कि आज तक जो भी हुआ है लाइफ में उसने कुछ चीज़ सिखाई है और उससे सीख के आप बेहतर बने हो. Yeah. It is not taking you back. It is taking you further with a new element of learning. A better job. A better version of me. Yeah. Yeah. Fast forward, Dubai कब आए? So ये जब कॉल सेंटर्स का जो सिलसिला था ये चल रहा था, एंड देन इन 2005-6 के आसपास आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कम टू ओमान एक्चुअली. तो वहाँ पे आई वाज वेरी यंग, वेरी वेरी अर्ली 20s, I think 21, 22 something maybe at that time. I came to Oman, and that was again a call center training job. Because by that time, my last job in India was Wipro BPO, Yeah. where I joined as a call center, क्या बोलते हैं, agent, telecaller. But then they promoted me to a trainer. Trainer. उनको लगा कि भाई okay, he can do well, he can train a batch, and I became a trainer. I got trained very well there, and there were a lot of good certifications that they gave us. And उसके बाद जब मैं ओमान में आया, I became the youngest trainer in that entire group of companies. That gave me a new challenge. Because, and at the back of my mind, parallelly, still वो सपना on था. या मुझे तो एक्टर बनना है. चलो, लेकिन ये भी है, ये भी करूँगा, बड़े मुझे मज़ा आता है करने में, मैं इसको करूँगा. और मैं इस चीज़ को एक कैरेक्टर समझ के करता था. Now that's the beauty of it, because if you look at it, that kept me motivated till today. So if you ask me, everything that I do today, I'm playing a character. As a voice artist, I'm playing a character. As an MC, anchor, host, presenter, all these roles, I'm playing a character. When I'm training so many people, if I'm training someone on processes, I'm playing a character. If I'm training someone on soft skills, or on negotiations, or on selling skills, on customer service, or on how to handle angry customers, I'm playing a character. For sure, because you have to play multiple personalities. Yes, and I enjoyed it. I loved it. And that's when that job kept on. Then in Oman itself, I got, thanks to my ex-boss, Samir Gupta, he was like, okay, ठीक है. Because I told him I wanted to do something in this field. मुझे voiceovers वगैरह करने हैं. He connected me to a lot of good advertising agencies in Muscat. And Muscat is a small market. Yeah. Everyone knows everyone. वहाँ 1-2 मैंने प्रोजेक्ट्स करे, everyone knew me. तो वो मेरे लिए अच्छा हो गया. एंड देन सोशल सर्कल कुछ ऐसा बना, नेटवर्किंग कुछ इस तरह से हो पाया कि इवेंट्स में लोगों ने बुला लिए. तो आई एक्चुअली स्टार्टेड एंकरिंग शोज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन ओमान. छोटे कॉर्पोरेट इवेंट्स से शुरू करा मैंने. कुछ एक किसी का अवार्ड्स था, कुछ they just put me on the mic and said, can you host this show? Yeah, I will do it. मैंने बोला yeah, इसमें कौन सी बड़ी बात है. And like, no, you just have to like host, it is awards night, yeah. I was like, okay, बोलना क्या है, मुझे बता दो किसका नाम किसको क्या बुलाना है. ये ओके, बट आई डिड इट इन माई ओन वे, जैसे मुझे मजा आता. तो वहां मैंने कैरेक्टर बदल लिया. In the classroom, it's a different character. I'm imparting knowledge. Yes. Yeah, you're instilling skills in people. But there, I'm entertainer, right? तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि अगर मैं बस बंदे का नाम लिखा हुआ है नंद कुमार सो एंड सो भगवान साइबर टेक, मैं क्या नाम बोलूँ. भगवान साइबर टेक कंपनी का नाम है, नंद कुमार इसका नाम है. मैंने एक बात बताओ, ये नंद कुमार के बारे में कुछ बताओ मुझे. तो उसने मुझे कुछ चीज़ें बताई, मैंने उसको लिख लिया. फिर मैंने बोला, सो भगवान साइबर टेक की टीम में there was a person who joined in the capacity of this, and then he grew in the company and and this journey, and he's known to be absolutely fun-loving person, John of the team, Nand Kumar. That became presenting a name. उनको बड़ा मजा आया, उनसे भी ज्यादा मजा मुझे खुद को आया. मैंने ये तो बड़ी अच्छी चीज है यार, इसको क्या बोलते हैं, इसको एंकरिंग बोलते हैं. Then someone came to me and said, do you do this professionally? I said, I don't know. I've never done it. This is the first time I'm doing it. You should do it. This is good. मैं बोला, okay, fine, I'll do it. तो ये करते करते एक टाइम ओमान में ऐसा आया in 2000, I think it was 2010 or something. And I was like, okay, I shifted my job. I moved to something else. Then that job, which was into an education company, it brought me to UAE. Okay. It was a job transfer. I had come to Dubai before, UAE before, just to visit. But I
didn't really think of settling down here. My job was there. And by that time, that sapna of becoming an actor and all of that, अब मैं मुंबई नहीं जा पा रहा हूँ, तो यहाँ फुदक के कोई फायदा नहीं है. चुपचाप अपना काम करते रहो, सपना ऑन रखो. गिव अप नहीं करना. उस सपने को किसी और थ्रू से मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो कर लो. वो मैं कर रहा था जॉब के थ्रू. और जहाँ कुछ मौका मिला, कुछ स्किट्स करने का, कुछ जो कुछ ड्रामेटिक्स, कुछ थिएटर ग्रुप्स, छोटे मोटे जो वहाँ पे थे प्लेस के छोटे मोटे, वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया. आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट. आई क्वेंच्ड माई थर्स्ट विद दैट. सो माई सोल वॉज हैप्पी बट कुड डू मोर. वो जॉब जब यहाँ पे शिफ्ट हो गई, दैट्स व्हेन लाइफ चेंज्ड. यूएई ने मुझे एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दी. Yes. So then UAE में you got a lot of opportunities for becoming the voiceover artist. Yes. And hosting, anchor. Yeah, how was that journey? What was your best thing about UAE? I would say the best thing about UAE is that but in 2017, when I quit my job, I didn't have anything in my hand as a backup plan. I was in my two minds. Should I go to Bombay? Should I finally go to the Maya Nagari, sapno ka shehar, make my dreams come true? Or should I just stay back? I was like, you know what? नहीं हो पाएगा. वो रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज वहाँ पे बहुत स्ट्रगल है, अलग किस्म का स्ट्रगल है, अलग ही है वहाँ और कंपटीशन का लेवल ही अलग है. और मैंने अपनी आधी जिंदगी यहाँ बिता दी है. अगर ऊपर वाले की मर्जी है और वो चाहता है कि मैं इस चीज़ में परस्यू करूँ इसको, तो मैं इसको यहाँ रह के करना चाहूँगा. तो मैंने वो एक लीप ऑफ फेथ था, मैंने छलांग लगा दिया एंड जॉब छोड़ दी मैंने वन फाइन डे. Within just the first few months itself, I met Kajal, my wife. At that time, we met at a networking event, and she's from the digital marketing background, so she was like, "Okay, what do you do? क्या करते हो ये वो?" And she saw me presenting something to somebody. So she was like, "You present really well. You should consider doing something in this." एक्चुअली मैं होस्ट करता था शोज़ वगैरह, मैं शोज़ होस्ट करता था ओमान में. यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करा है बिकॉज यहाँ मैं किसी को जानता नहीं. मैंने अभी भाई जॉब छोड़ी, अब मैं वेला हूँ, बताओ कुछ काम हो तो. एंड शी इज़ लाइक, ओह ओके, शो मी सम शो रील्स. एंड मेरे पास कुछ था नहीं दिखाने के लिए बेसिकली. तो एंड सिंस शी वॉज फ्रॉम द डिजिटल मार्केटिंग फील्ड, शी सर यार कुछ होना तो चाहिए ना दिखाने के लिए. हाउ वुड यू शो केस योर वर्क? मतलब बनाना पड़ेगा कुछ नया. शी इज़ लाइक, ओके काम करते हैं, ओके we'll discuss about this, maybe we can work out something. मैंने ये सही है, you make this for me and I will do something for you. वो barter, and she only suggested actually कि ऐसे कर लेते हैं, ये barter system कर लेते हैं. मैंने okay fine. And then eventually you fell in love. वो हुआ. Actually पता है क्या, we never fell in love. हाँ, वो एक पार्टनरशिप थी जो हमारी शुरू से काम के सिलसिले में शुरू हुआ. वो करते 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 ऐसा होगा कि we grew together so much because she left her job after a few months, from that point, and I started getting my events. She was marketing, I was getting those events, and I was selling and marketing her services, so she was getting more clients. So barter system वो चलता चला गया. हमारी पार्टनरशिप जो साझेदारी जिसको कहते हैं, वो इतना बढ़िया हो गया कि we were spending literally the whole day together. वो करते 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 we till today we don't have a specific date when I would say कि हाँ मैंने उसको बोला कि would you we would get into a relationship or anything. वो हो गया. It was meant to be. It was meant to be. Yeah. So 9th of June is the day we celebrate our meetversary because that's the first day we met. So that's it. 2017, and then उसके बाद I think the whole Dubai knows Joe and Kajal. Then we started a company called JK7 Services, JK7 Media, which is again where we focused more on media related activities. JK, हम दोनों का नाम भी था उसमें. 7 is the day I was born, and I believe in number 7 is a divine number, I feel. So yeah, then we got Kia. Kia is our little puppy, not so little now, but because she's the so bus. She's a Labrador, right? She looks like a Labrador, but she's actually a golden retriever. हर कोई ये पूछता वो Labrador है ना, क्योंकि उसके the fur is not too long. अच्छा. So दूर से वो Labrador ही लगती है. Yeah, even we thought so. But yeah. So this is the. So your story. journey has been super long. Yes. Acting कब हुई इन सब चीज़ों में? Auditions कब हुआ? ये auditions जो है ना,
ये हो नहीं पा रहे थे. ओमान में रहते हुए किसी there was a South African director who was doing a college project and he had seen me somewhere and he called me and he gave me this opportunity. So again he did a casting, a screen test, he did that. I acted. उसने मुझे सेलेक्ट कर लिया. इत्तेफाक देखो, so there is a friend of mine called Krishna, RJ Krishna, because she was presenting a show in Beats FM here. So she and I, we were put together in that short film जो ओमान में था. उसके बाद कोई एवेन्यू नजर नहीं आ रहा था मुझे कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ. Unless and until you're in that universe or that gamut of things or that galaxy of things where things are happening, you wouldn't know. मैं अलग ही दुनिया में जी रहा था. जब यूएई में आया, even then it took me so long to actually get into that realm जहाँ पे कुछ opportunities मिले. और फिर जब मिलने शुरू हुए, मिलना मतलब जब वो नॉलेज आना शुरू हुआ कि अच्छा यहाँ कास्टिंग हो रही है, अच्छा वहाँ पे कोई ऑडिशन कर रहा है, फिर मैंने जाना शुरू करा. मैंने जितने ऑडिशंस दिए उसका मुझे कोई हिसाब नहीं है. मैं आंख बंद करके पहुंच जाता था. मैं ये भी नहीं देखता था कि ये पेड प्रोजेक्ट है, अनपेड प्रोजेक्ट है, स्कूल प्रोजेक्ट है, कॉलेज प्रोजेक्ट है. मैं बस चला जाता था. मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जाना. देखो कमाई तो हो ही रही है ना. नौकरी तो मैं कर रहा हूँ, पैसे आ रहे हैं. नौकरी आई मीन द एंकरिंग एंड होस्टिंग, पैसे तो आ रहे हैं ना. ठीक है. एक्टिंग करने का मौका मिल रहा है, वो वहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, जाओ. तो वहाँ से एक चीज़ तो मैंने सीख ली कि एक्टिंग करते 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 जब आप एक सक्सेसफुल एक्टर बन जाते हो, when the market recognizes you, that's when you start getting paid good. Yes. Until then, if you get paid, very good. वो तो नसीब हो गया फिर. नसीब बहुत अच्छी बात है. But don't make money the central aspect of your craft. Because if that's what your soul is, wanting, just do it. Don't bring money into it. But you need money to survive. Do something else to survive, na? नौकरी कर लो. And eventually when you become so good that becomes your primary source of income. Then you go with that. Yeah, and there's not a lot of people realize this. I have hardly met anyone who realized it. I realized it myself. पता नहीं कहाँ से. For sure. It's because of you've struggled so long. Yeah. You had that like I value a good it so much journey. also. Yes, you had. कि इसकी वैल्यू इतनी है कि भाई मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ इस चीज़ के लिए. हाँ कोई दे रहा है, I would take it. मेरी मेहनत है. Yes. कोई खुशी से दे रहा है तो. लेकिन उस पैसे के चक्कर में मैं इतना बढ़िया मौका और अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ सकता मैं, जो मुझे अब मिला है. Almost 4 decades in life के बाद. 4 decades? You're Yeah. kidding, right? Yeah, I've just crossed my 40. Oh my God, Joe. You don't even Yeah. look 40s. That's a So, good thing, this no? brings me back to another question. Have you ever felt that you want to give up at any moment? And I know the thing is, a lot of people, now that people are getting educated because of social media again, you want to relive your dreams that you've forgotten in 20s. Have you ever felt कि, in my 40s, you just crossed 40, do you ever feel कि मैं भाई क्या कर रहा था इतने टाइम तक? And you ever feel कि मैंने क्यों नहीं किया इस चीज़ को पहले, या मुझे अब गिव अप कर देना चाहिए, अब मैं बहुत ज़्यादा, मेरी एज हो गई है XYZ. पता है, इट मे साउंड फनी दैट बस वो नंबर बढ़ रहा है मेरे लाइफ में एज एज. अंदर से, दिल से, दिमाग से, आई एम स्टक इन माई चाइल्डहुड ओनली. It is good that it is good to have that innocence. मुझे कोई शिकायत नहीं है इस चीज़ को लेके कि यार एज बढ़ रहा है मेरा, मैं क्या करूं. Because when I see, I am doing everything that I love doing. Yeah. I'm having fun in life and I enjoy and I do things that I believe in. और जब तक मुझे मजा नहीं आता मैं नहीं करता उस चीज को आगे. काम में मजा आना जरूरी है, बहुत And that is बहुत जरूरी important, है. yeah. Very That is important. important. That's when you can be. And to be an actor also, acting is a profession of honesty. It's the utmost degree of honesty where you are portraying a totally different character in all its truth. Yes. I know what you mean. Like, कुछ लोग कहते हैं झूठ बोलना ही तो होता है एक्टिंग. Wrong. That it can't be farther away from the truth. झूठ बोलना झूठ होता है. एक्टिंग करना या करेक्ट सही मायने में एक्ट कर पाना is playing a character. You need to be so true to yourself. It is the most honest profession, I would say, which is connected to your soul. yeah.
So I enjoy every bit of it. इवन इफ वो झूठ बोलना कहते हो पर वो झूठ में भी ऑनेस्टी दिखानी है, नहीं तो आप भी बिलीव नहीं करोगे एज एन ऑडियंस. झूठ का तो इंटेंशन ही अलग हो गया ना कि भाई आप झूठ क्यों कह रहे हो. कोई उसमें स्वार्थ है आपका या किसी का कुछ नुकसान करना चाहे. आप एक कहानी के किरदार हो. वो किरदार है, यू प्लेइंग दैट रोल, द कैरेक्टर इन ऑल इट्स ऑनेस्टी टू डिलीवर अ सर्टेन मैसेज एंड टू मेक इट बिलीवेबल टू द ऑडियंस who's watching it, so that they cry when you cry, so that they feel that anger when you express the anger. That is the power of that an actor can possess. I wish I had the opportunity to learn it when I was younger, जो मैं चाहता था लेकिन हो नहीं पाया. तो मैं आज, तो ये मेरा लाइफ का सिस्टम है, मैं मौका नहीं छोड़ता. I will never leave an opportunity to learn. Keep on learning. चाहे रात के 12 बजे मैं इवेंट करके आऊँ, मेरे गले की बैंड बजी हुई है, फिर भी मैं रात के 2 बजे तक I will be watching, some of those people that I really love, following. I learn from them. और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मेरे पास, एवेन्यूज नहीं है, तो मैं जो मिलेगा मैं वो सीखूंगा. I went for some workshops in UAE, some acting classes also. अब एक वर्कशॉप आने भी वाला है. I'm the first one to go and enroll. मौका नहीं छोड़ना है. जाओ सीखो. Because you have to learn. That is the only way you can get best. Like Shahrukh Khan says, I am in no competition with anybody. Yeah. I am the best. Not because you are not better than me. You might be. But I am the best. Yeah. मैं अपने लिए बेस्ट हूँ. आप भी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे हो. So that confidence should not be mistaken as overconfidence. That confidence also means that I know my weaknesses and my shortfalls. I would need to fix those things. Self-awareness is very important. It's been intense talk. Let us cool it down. We have a new segment at the Fat Kid Okay. Show, and that is Unfiltered Sawal. Oh my I'm going to God. ask you questions. You can just give me short answers for the same. Short answers, okay. Let's start. Okay. What is the most important thing in your life right now? Right now, my family is most important. Okay. If not acting, if not a presenter or a voiceover artist, what is that one profession that you would have selected? No profession. Jobless रहते हैं? नहीं, जॉब तो मैं ऐसे ही कर लेता. कोई भी जॉब कर कुछ भी कर लेता. Whatever I enjoyed, I would have done it. Cool. Yeah. If you could invent a new holiday, हाँ. ठीक है, what would it be called? New holiday? हाँ. I didn't get you. Like अगर आपको कैलेंडर में बोल दे कि आपको एक नया हॉलीडे मतलब इन्वेंट करना है कि ये नेशनल हॉलीडे वर्ल्ड सेलिब्रेट कर रही है, what would it be? Nothing. I don't know. I wouldn't create any holiday. Okay. What is something that you're grateful for every day? I'm grateful for everything that God has given me on a day-to-day basis. हर चाह, everything that I wished for, भले लेट सही, मिलता जा रहा है. I'm Are you happy a for this. religious person? No, I'm a spiritual person. I believe in the existence and the power of God and the universe. I don't subscribe to any certain religion. Okay. So yeah. What is that one advice your parents gave you, which you still follow? I would say the thing that I still believe in is love, because I see it wasn't an advice, but it's something which I saw and I learned and I was inspired by. That's my dad and mom. They are super in love, even at this age when people drift apart. But Yeah. I have seen that, and that inspires me. Yeah. Okay. What is the hardest part about being an adult according to you? Hardest part? Of being an adult? Being worried about earning a livelihood. Yes, Yeah. yes. Paying the पैसे bills. कमाने यार, bills pay करने. Yeah. Now this is the toughest question. Okay. How do celebrities stay cool? ये तो तब मैं बता पाऊंगा जब मैं एक सेलिब्रिटी बन जाऊंगा. मैं जवाब दूंगी. हाँ. Because they have fans. That's a PJ. You know, Joe, with this conversation, I remember in my life, I don't read. मेरे को reading की इतनी आदत नहीं है. आदत नहीं है. Okay. And है ना, मेरे दिमाग में एक quote है जो मैंने 6th standard में सुना था. Okay. Okay, and it is imprinted in me so well and so deep that this conversation can be summarized into this quote, Okay. which says, small things make perfection, but perfection is not a small thing. Wow.
एंड इट इज़ सो डीपली रूटेड इन मी दैट एवरी टाइम मुझे कोई कोट याद नहीं होगा, पर ये ना, सो दिस कॉन्वर्जेशन वॉज सो इंसाइटफुल. It was so amazing that I'm sure if the audience listens to the entire podcast, it's going to be great for them. क्योंकि ना एक लेट एज पे आपके पैशन को लिव करना, not everyone does that. Yeah. I've seen my parents also give up on their passion, and for me as well, just coming into 30s, I was about to give my passion to become a content creator or a podcaster. That is what I know now. Yeah. But then looking at you now, it gave me a sense कि भाई it's okay. It's okay to be late. Yeah. एंड यू नो जो ऑनेस्टली आई टेल यू, मेरे साथ भी ना लाइफ में हमेशा चीज़ें लेट हुई है. एजुकेशन के बाद जॉब लेट, अच्छी जॉब लेट, एवरीथिंग लेट, एंड आई हैव सेड दिस सो मेनी टाइम्स ऑन द पॉडकास्ट. बट दिस इनसाइटफुल फ्रॉम यू ना, आप इनसाइट. ये सोचो, लेट किस मायने से, हाँ, किस रेफरेंस से. हाँ, लेट हमें लगता है, बट चीजें वही होती हैं जब जिसको जिस वक्त जो होना होता है वो तभी होता है ना. करेक्ट. तो मैं ना बहुत कोसती थी, लाइक आई डिडंट हैव दिस पॉजिटिव माइंडसेट एज यू, एंड आई वुड से कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, एंड आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, आई विल नॉट गिव अप. पर है ना, जब वो रिजल्ट नहीं आता था मेरे को बहुत दुख होता था. बट दिस ना, इट गिव मी अ डिफरेंट सेंस कि इट्स ओके, दैट इट्स ओके थिंग ना is what I really take away from this podcast. And thank you so much, Joe. You've been like a really good guide. Your talk has been motivation, and I know we could have spoken for one more hour for sure. अगली बार कर लेंगे. Yes, and I'm really excited कि अगली बार जब हम बात करें, you have many more series ongoing, and I really pray that you become so freaking busy that मेरे को time ही ना मिले, but in a good way. Yes. And I really wish you all the best, Joe. And thank you so much for coming. Thank you so much for coming for the show. Thank you so much. The pleasure is mine, and I look forward to seeing the whole episode. I want to see what people say, what they feel. But yeah, over and above everything else, I wish you all the best. Thank this you is so season much, 2, Joe. you said, right? Yes, This is season 2. First So episode. I'm Excited. so happy that you called me for the first episode itself. So I wish you all the best. Thank you so much, Thank Joe. you. Thank you so much. Thank you so much, guys, for watching this podcast. It was amazing talking to Joe. And if you like this video, do not forget to subscribe to my YouTube channel. Follow me on Spotify, Apple Podcast, and Amazon Music. And I'll see you next time. Bye.